Good evening, everyone. Am I audible and visible? I hope I am. So let's start the class. Okay. Firstly, with the announcements that I have for you people today. This is the All India mock test that we have over here. Okay, on the screen. It's on. Good evening, Varun. Good evening, Bacha. It's on every Sunday in the month of January. I think today is Friday. Okay, today is it is Friday. So day after tomorrow, you have this test. Appear for it. It gives you a good practice. Good questions are there. It gives you a feel of the real gate examination, so that when you go to the gate examination, it's not like that. What's happening actually? That kind of a situation. So appear for this test. If you want to appear for this test, scan this QR code, enroll for it. For the enrollment, you need the code. Use the code Aditya Max. इस कोड का इस्तेमाल करिए. ओके. देन ये भी एक टेस्ट हो रहा है संडे को, दैट इज ऑन 23rd of January मॉर्निंग 11 AM. गेट मेगा कॉम्बैट है. अपीयर फॉर दिस ऑल्सो. अच्छी प्रैक्टिस होगी. इवन यू गेट अ चांस टू हैव स्कॉलरशिप एंड good questions are there. 200 lucky participants stand a chance to win exciting things which are here on the screen. So go for it. Detailed video solutions will be provided to you. Everything will be there actually. So go for this test. इसके लिए appear करिए. नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ढेर सारे. इन बैचेस को ज्वाइन करिए. इन सब बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड चाहिए होगा और कोड सेम है आदित्य मैक्स. लाइव लगा लेना आगे. आदित्य मैक्स लाइव. यूज दिस कोड टू एनरोल फॉर इट. यूज दिस कोड टू एनरोल फॉर इट. तो स्टार्ट करते हैं क्लास. तो देखो यार, टू फिनिश योर सिलेबस बिकॉज द गेट एग्जाम इज रियली वेरी नियर. So what I'm planning is to extend the class. Good evening, Navneet. Good evening, bacha. To extend the class, not the hours that we are having over here, I'm going to shift it to the special class. Okay. मेरा मॉर्निंग का जो बैच है प्लस वाला, दैट विल गेट फिनिश टुमारो. इन दैट आई हैव टू टीच टुमारो CTPT एंड विद दैट द सिलेबस विल बी ओवर. एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन इन दैट बैच. So that slot will get free. So what I'm going to do in the morning के टाइम में अराउंड आफ्टरनून, नॉट इवन मॉर्निंग, 11 AM अराउंड 12 PM मैं स्पेशल क्लास आपकी डालूंगा. ठीक है. नवनीत बच्चा उस पर मैसेज कर दो. टेलीग्राम पे कर लेंगे, वहां बात कर लेंगे. ठीक है. वी विल टॉक ओवर देयर. मैं स्पेशल क्लास में आपका शिफ्ट कर दूंगा. मतलब जैसे आज आपकी क्लास फ्राइडे को हो रही है, कल तो सैटरडे को नहीं हो पाएगी क्योंकि कल बैच है और शाम को स्पेशल क्लास है. संडे को छुट्टी लेने के बजाय मैं संडे को मॉर्निंग में अराउंड 11 या 12 PM आपका क्रैश कोर्स कंटिन्यू करूंगा स्पेशल क्लास पे. ठीक है. ठीक है नवनीत, तो जैसी क्लास खत्म होगी ना उसके बाद करना फिर मैसेज, क्योंकि अभी क्लास के टाइम भी ढेर सारे मैसेज आएंगे फिर नीचे चला जाएगा. जैसी क्लास खत्म करूंगा, बंद करूंगा, उसके 2 मिनट में मैसेज कर देना. वरुण, थ्रोट is troubling me. That's the only reason I'm not starting any new course in Plus actually. I'm concentrating on you people because I can't take a off now, uh, because I have to finish the course because the gate exam is very near. So that's why. Okay, no problem. But संडे को स्पेशल क्लास लेंगे, मंडे को भी स्पेशल क्लास लेंगे और मंडे को शाम को यूट्यूब क्लास भी लेंगे. ट्यूसडे को फिर से आपकी स्पेशल क्लास लेंगे और होपफुली ट्यूसडे को आपका कोर्स खत्म कर दूंगा. होपफुली हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए. तो ये मैंने सोचा है. तो इसलिए अब आपको स्पेशल क्लास में आना पड़ेगा. काफी बच्चे जो आप लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हो, आप स्पेशल क्लास में भी क्लास करते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं. जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूं. अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करना या वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरा प्रोफाइल आएगा, उस प्रोफाइल को फॉलो कर लेना. नहीं तो जब आप चैट पढ़ रहे हो, सबसे टॉप पे चैट में देखो लिंक दिया हुआ मेरे प्रोफाइल का. ठीक है. उसको डाउनलोड करना, मेरे प्रोफाइल को मेरे नाम सर्च करके प्रोफाइल को फॉलो कर लेना. प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद स्पेशल क्लास में आ जाना. स्पेशल क्लास में आने के लिए वो कोड मांगेगा, कोड के बिना एंट्री नहीं देगा. कोड होगा आदित्य मैक्स. फ्री क्लास है वो भी, बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली फ्री.
इस कोड को यूज करके आप लोग क्लास में आ जाना, ठीक है? तो नाइक्विस्ट वहां होगा। अगर आप लोग ये मान के चले कि संडे की क्लास और मंडे की क्लास नहीं करके सीधा रात को यूट्यूब की क्लास में आओगे, तो अगली क्लास में यूट्यूब की मत आना, समझ में कुछ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। तो नाइक्विस्ट सारा उसी में निपट जाएगा, क्योंकि 4 आवर्स जो है नाइक्विस्ट के चलेंगे, 2 आवर्स मॉर्निंग में, फिर 2 आवर्स मॉर्निंग में, फिर हो सकता है नाइक्विस्ट पूरा स्पेशल क्लास में ही खत्म हो जाए। ऑल्दो बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है, डिटेल में तो नहीं करवाऊंगा जैसे क्लास में किया था 15-20 घंटे में, बट हाँ जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कर लूंगा। हाँ, पिन्ड है वरुण, यहाँ पे भी पिन्ड है लिंक, यहाँ पे भी, तो जो पिन लिंक यूज करना चाहते हैं यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो मैंने सारी डिटेल्स दे दी हैं। बाद में मत कहना कि हमें पता नहीं लगा, आपने कहाँ पे क्लास ले ली, फिर मैसेज मत करते रहना सर कहाँ पे ढूंढनी है आगे की क्लास। डिटेल मैंने दे दी है, मुझे तंग मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव ऑन। So, in the last class, we did few important things about the board plot. I hope if the question comes on the board plot, that if a board plot is given, you have to find the transfer function, you can do that. I hope you can do that, isn't it? Can I hope that? क्या मैं ऐसा होप कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं आपसे ऐसी? ठीक है, now we are going to study gain margin and phase margin. Let's talk about it. Gain margin and phase margin क्या होता है, लेते हैं एक एक करके, दोनों को उठाते हैं, ठीक है? फर्स्ट we are going with gain margin. What is gain margin? It is the maximum gain that can be added in this. It is a factor by which the gain can be increased so that the system is driven towards the verge of instability. This time also in the mock interview, I asked this question to a student and he gave me the wrong answer. I asked him what is gain margin. His answer was, sir, it is the maximum gain that can be added in the system so that the system is driven towards the verge of instability. Wrong. If you want to say that it's the maximum gain that can be added in the system, then please add the word dB. It's a maximum gain that can be added in decibels. Why, sir? We're going to talk about this. We're going to see about these things very shortly. Good evening, Shubham Bacha. Good evening. A very good evening. So let me write it down for you people. Gain margin. It is the factor. हाँ, definition लिखवा के दे रहा हूँ बच्चा, बिल्कुल दे रहा हूँ वरुण. It is the factor by which gain can be increased so that the system is driven towards the verge of instability. And in the mains examination also, they have asked the question like this: explain the gain margin and phase margin. So you should know it is a factor by which the gain can be increased so that the system is driven towards the verge of instability, or it is the maximum gain in dB. This is the most important word that you should not miss. It is a maximum gain in dB that can be added in the system. It is a maximum gain that can be added in the system so that the system is driven towards the verge of instability. ये डीबी वाला वर्ड ना यार बहुत खतरनाक है, इसका ध्यान रखना, अदरवाइज ये फैक्टर है. इवन व्हेन वी वर स्टडीइंग द रूट लोकस, आई एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई डिडंट गेट इट ओवर देयर. So let me repeat it for you people. Let me repeat it for you. Suppose you have a transfer function GSHS is equal to 6 upon S into S plus 1 into S plus 3.
And if you plot its root locus, suppose the root locus is something like this. What I mean to say that at this point, k marginally stable is 12. So I can say that the gain margin will be, because in root locus I told you the formula k marginally stable upon k desired or k designed. So this will be 12 upon 6. Gain margin is 12, 2. So if you add 2 to 6, see, if you add 2 to 6, you will not go to 12. So it is not the maximum gain that can be added in the system. You can't say gain margin is the maximum gain that can be added in the system so that the system is driven towards the verge of instability. Absolutely false. It is the it is the factor by which the gain is increased so that the system is driven towards the verge of instability. It is the factor. I'm multiplying it so that the system is driven towards the verge of instability. अगर मैं ये gain margin decibels में निकाल रहा होता, so when you take dB of this, it will be 20 log of 6 plus 20 log of 2. So in dB it gets added. In dB it gets added, but in normal amplitude form it gets multiplied. So please keep this thing in mind, okay? Do not do mistake in the examination about this thing. So this was all the theory part, okay? Now, how to calculate the gain margin when we are in the frequency domain? जब हम frequency domain में है तो gain margin कैसे निकालेंगे? See, gain margin is basically equal to the magnitude of the open loop transfer function at the phase crossover frequency. That is what you're going to do. You're going to find the phase crossover frequency of the system. And then you will see what is the magnitude of the system at the phase cross. System मतलब open loop transfer function की बात कर रहा हूँ. Okay. From the open loop transfer function, you get the closed loop transfer function stability conditions. Okay. So what you're going to do, you're going to find the phase crossover frequency for the system. Once you have the phase crossover frequency, at that frequency, you will find the magnitude of the system. And the inverse of the magnitude will give you the gain margin. Okay, it's as simple as that. We will do one or two questions also for the practice so that this concept is clear to you people. But the thing is that, so what is phase crossover frequency? So let's see what is phase crossover frequency. But one thing you remember, gain margin is calculated at omega PC. Gain margin is calculated at omega PC. Okay, moving forward. What is phase crossover frequency? Let's talk about it. So let's talk about phase crossover frequency. Yatish, thank you so much, bacha. Thank you so very much for your love. Thank you, bacha. Phase crossover frequency. What is the phase crossover frequency basically? It is that frequency at which the phase angle of the system is minus 180 degree. What I mean to say is that when you vary the frequency of the frequency, the phase angle of the system is going to vary. Obviously, there will be some frequency at which the phase angle of the system will become minus 180 degree, and that frequency will be called as the phase crossover frequency. Okay. Namaste, Praveen. Thank you, Yatish. Thank you so much, bacha. Thank you. So let me write it for you. Phase crossover frequency. It is the frequency. It ऐसे लिख देते हैं. It is that frequency at which phase angle of the system is minus 180
80 degree, minus 180 degree. Okay, so what we do, let me write the steps for you people, how it is going to work. So the first thing that you're going to do is you will find the angle of the transfer function that is given to you, because obviously he's going to give you the open loop transfer function of a closed loop system whose stability he wants you to find out. So once you have the open loop transfer function, you're gonna equate the angle of that open loop transfer function to minus 180 degrees. When you will do so, obviously from here you're going to get some frequency. That frequency will be phase crossover frequency. That frequency will be phase crossover frequency. After finding the phase, these are the steps actually which you have to follow for finding the gain margin. Okay, so the first step is that you have to find the angle in the frequency domain for the open loop transfer function. Equate that angle to minus 180 degree. Obviously you're going to get some frequency. That frequency you're going to call as a phase crossover frequency. But now after finding the frequency, you have to do the validity check. Okay, after this what you have to do, you have to go for the validity check. So what do you mean by validity check? I mean to say that the frequency that you have got, it cannot be negative, it cannot be complex, or you can say imaginary, a better word. It cannot be imaginary, or it cannot be infinity. It cannot be infinity. It means the omega that you have got, it should be greater than or equal to 0 and less than infinity. If you are getting this, then you have got a valid phase crossover frequency. Nitin, no, you see, it's a different thing. We are finding the stability of a closed loop system, the finding the gain margin of that system. We are finding the stability of a closed loop system by finding the gain margin of that system. But for calculation of the gain margin, we use the open loop transfer function. Okay, for the calculation of the transfer function, we use the open loop transfer function. For example, if I say to you that this is the system that I have, and I'm asking you to comment on the relative stability of the system, or I'm asking you to find the relative stability of the system. So if you want to find the gain margin of the system for the calculation, you will be taking the open loop transfer function. So you are finding the gain margin for the overall system, but you are using the open loop transfer function for the calculation purpose. Okay. Now, coming back. So once you have the phase crossover frequency, now what you're going to do? You're going to find the transfer function magnitude at this frequency. That is, whatever magnitude you have, in that, in case of omega, put the value of omega pc. In value of omega pc. Now you have the magnitude at omega pc, and then finally you can say, here you go, gain margin will be the inverse of the magnitude of the transfer function at the phase crossover frequency. This is the magnitude that I have got. This is the gain margin. ओके, तो इस तरह से बच्चा गेन मार्जिन निकाला जाता है. दिस इज द प्रोसीजर दैट यू फॉलो टू फाइंड द गेन मार्जिन. अब अगर आपको गेन मार्जिन चाहिए डीबी में, सर आई वांट द गेन मार्जिन इन डेसिबल्स, व्हाट यू गोना डू? यू गोना टेक 20 log of this. Can I write it like this? Minus 20 log of magnitude at, अब ये फोटो के पीछे ना आ जाए, magnitude at phase crossover frequency. ओके, हम क्या कह रहे हैं? गेन मार्जिन डीबी में क्या 20 log ले लिया, बॉडी प्लॉट में तो सीख ही लिया हुआ है अब ये. Now, the next question that comes to our mind is that, sir, what if the validity check fails? What if the validity check fails? Sir, I found the omega PC, but omega PC came out to be negative. The omega PC came out to be imaginary. Omega PC came out to be infinity. Sir, in that case, how will I find the gain margin? In that case, you find the absolute stability of the system. How?
By using the route. You use the route table and you will see whatever transfer function is given to you, or whatever open loop transfer function is given to you, make the characteristic equation. From the characteristic equation, find the develop the route table. If that system comes out to be absolutely stable, say gain margin is plus infinity. If that come out to be unstable, say gain margin is minus infinity. So if invalid phase crossover frequency comes, then you go for the absolute stability of the system. And depending on the absolute stability, you will say the gain margin is either plus infinity or minus infinity. Now, I'm not going into detail, but if you're my classroom student and you're just revising the stuff over here, I told you the gain margin about non-minimum and minimum phase systems also, and I told you for stability that अभी लिख देता हूँ, वो check कर लेना non-minimum minimum वाला. Non-minimum is zero right half में तब क्या होगा, pole right half में तब क्या होगा. So go through those things. I'm not dealing it with over here because those are very intricate and complicated topics not to be done in a normal crash course. और आने के chances कम होते हैं उन चीजों के. Revise कर लेना बस आप लोग लेकिन. आगे चलते हैं. So you see, if I want the system to be stable, this thing I told you when we were studying the root locus. For stability, gain margin should be greater than 1 or gain margin should be positive in decibels. So if the gain, all these things I'm talking about the minimum phase system which is normally considered. Okay. So if the gain margin comes out to be greater than 1 or if the gain margin comes out to be positive in decibels, then you can safely say that your system is stable. But for marginal stability, the gain margin is 1 because you don't have any margin actually. You do not have any factor available to you because you're already on the boundary actually. It will be too complicated to deal with all those things. If you want to listen to me, just listen it. If you have a non-minimum phase system in which 0 is in the right half, non-minimum because of the 0 in the right half, then these conditions will be valid. Gain margin positive in decibel stable, 0 marginally negative unstable. But if you have a non-minimum phase system in which pole is in the right half, then gain margin negative in dB will be stable, gain margin positive in dB will be unstable. It's as that. प्रूव नहीं कर रहा, बता रहा हूं बस. अब सुन लो, आपने पूछा तो मैंने बता दिया. ठीक है. सो गेन मार्जिन इज 1 और gain margin is equal to 0 dB. Okay, because you have no gain in decibels to add to make the system unstable. It is already on the boundary. You add anything, system will become unstable. That's why I do not have any margin. So gain margin is 1 or 0 dB. And instability की अगर बात करते हैं, gain margin less than 1, that is negative. You already unstable. How can you add some gain? Or negative, that is negative gain you have to add. That is, it is already unstable. By putting negative, you are bringing it back to the stability region. It means the system is unstable. If you have to put the gain margin as negative, the system is unstable. So these are the conditions for the stability in case of the gain margin. Okay, now quickly moving to the phase margin because we do not have a lot of time. So let's move on to the phase margin. I think gain margin clear हो गया होगा. ठीक है. डेफिनेशन भी लोग गलत बोलते हैं. वो बोलते हैं इट इज द मैक्सिमम फेज दैट Shubham, if both are pole and zero are in the right half, we will decide with the help of the pole. We will decide with the help of the pole. Okay. Now, phase margin. People say that it is the maximum phase that can be added in the system so that the system is driven towards the verge of instability. Absolutely wrong statement. There is one very, very, very important word which we cannot miss in the definition of the phase margin. Otherwise, our answer will be absolutely incorrect. And if you are sitting in the interview, your marks are going to go down definitely. So what is the important word that we are missing? We are missing the phase lag. It is a maximum phase lag that can be added in the system so that the system is driven towards the verge of instability. Why sir lag has to be added? I'm not explaining all those things.
क्लास मतलब समझ रहे हो ना, क्रैश कोर्स है, इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन आई एम सप्रेसिंग बिकॉज इट नीड्स टाइम, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस भी खत्म करना है ना, तो जल्दी जल्दी करते हैं। ये चीजें याद रखना बस, ठीक है, इंटरव्यू के लिए काम आएगा, मेंस के लिए काम आएगा। इट इज द मैक्सिमम phase lag that can be added in the system so that the system is driven towards the verge of instability. हाँ नितिन, बहुत सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ, बिल्कुल बच्चा, एब्सोल्युटली राइट। So it is a maximum phase lag. Lag word is very important. You should not miss the word phase lag. Now the question comes to us is that, okay sir, I have understood what is phase margin. Okay, absolutely fine. But how will I calculate? What is the margin of the phase that I have at my disposal? So phase margin is calculated by the formula which you need to know because this is what you actually need to know. Question solve करने हैं आप लोगों को. So phase margin is given by the formula 180 degree plus phase angle of the system. इसको ऐसे लिखते हैं. Plus the phase angle of the system at the gain crossover frequency. What is, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं पहले, फिर बताता हूँ क्या है. Phase margin is calculated at gain crossover frequency. Gain margin is calculated at, sorry, phase margin is calculated at gain crossover frequency. Gain margin, phase crossover पे. Phase margin, gain crossover पे. Now the question that still remain unanswered is that what is the gain crossover frequency? So it is that frequency at which the magnitude of the system is 1 or 0 decibels. Okay, let me write it for you. Omega GC short में लिख देता हूँ, ठीक है? Omega GC is that frequency at which the magnitude of the system is 1 or 0 dB. ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे सिस्टम का मैग्नीट्यूड 1 होता है या फिर 0 dB होता है. Now, what is the process actually? The same way we outlined the process over here. First step, second step, third step. If you follow these steps, you are done with the gain margin. Similarly, what are the steps that we have to follow, sir, to find the gain margin? Let me, phase margin. Let me write it for you. The first step is find the magnitude of the open loop transfer function and equate it to 1. पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसको 1 से इक्वेट करेंगे. Obviously, when you will do so, you will find some frequency and that frequency will be the gain crossover frequency. Then again, like last time, you will go for validity check, which will be same like the last time. अगर validity check fail हुआ, then you will go for the absolute stability. But if validity check sustains, then what you will do is you will find the phase angle of the system at this particular frequency. That is, instead of omega in the angle, you will put this frequency value. So obviously you're going to get some, let's say, phase angle you got. This phase angle you got. Now you will say the phase margin is 180 degrees plus phase angle of the system at the gain crossover frequency. So I'm just writing it 5 omega GC, the value that I have got. This is the process that we follow to find the phase margin. Very simple. Next, if the system comes out to be stable, it means the phase margin is positive. If the system comes out to be marginally stable, it means, sorry,
it means the phase margin is 0 degree. You don't have any phase margin actually. You can't add any lag in the system. And if the system comes out to be unstable, it means you have negative phase margin. That is, you can't add anything. You can't add anything. So that's it. The next thing, how to find the gain margin and phase margin from the Bore plot. I'm not touching that because from the gate perspective and the pre perspective, I don't think that's very important, and they can ask something I have to skip actually. I can't teach you everything. It's a crash course because if I'll go with the calculation of the phase margin and the gain margin from the board plot, it's going to take at least half an hour, 1 hour actually to explain that thing. So we can skip that safely. But one point I want you to learn normally that I teach with the help of the board plot, because there are two ways to do this. So what you have a system, okay? Suppose 6 upon s into s plus 1 into s plus 3, or 3 upon s into s plus 1 into s plus 3. You have the gain margin, sorry, 6 upon s into s plus 1 into s plus 3. No, ये नहीं करते हैं. 3 upon s into s plus 1 into s plus 3. I'm sorry. 3 upon s into s plus 1 into s plus 3. Okay. And in this system, the gain margin you have is 4. I want the gain margin to be 2. I want the gain margin to be 2. What is the new gain of the system? Or by what factor I should multiply it so that I get the new gain margin? That's how they can ask the question. Normally, I deal it in DB with the help of the board plot, and normal shortcut method also I give. So the method I'm giving you, the straightforward method, please understand it carefully. Suppose gain margin is alpha, some gain margin you have, and you want the new gain margin to be beta. So by what gain you should multiply the original system to get the answer? So what do you mean by it? Suppose you have the original system as k upon s into s plus alpha into s plus beta, or whatever may be the transfer function. I don't know actually. So we are saying that if this is the situation, he's saying that what will be the new gain? He's saying that the original gain should be multiplied by what value? God knows what he's asking, but concept should be clear. So what are you going to do? The first step will be find k marginally stable. That is, this system will get marginally stable at what value of gain k? How are you going to do that? We have a very important tool at our disposal, that is Routh. We're going to use the Routh-Hurwitz stability criteria to find k marginally stable. You have k marginally stable? Of course we have now. ये given है, k marginally stable निकाल लिया Routh लगा के. Next thing. What will be k value? Right now in this situation, what is the k value? You know that, मैं आपके लिए लिख देता हूँ ना थोड़ा सा, अगर आप भूल गए हैं तो. You know that gain margin is k marginally stable upon k design or k desired, whatever you want to say, for which it is designed or desired. So in the present situation, the original situation, we can say alpha is equal to k marginally stable upon k design is k, for which we have done the calculation. So can you see from here, k will be k marginally stable upon alpha. So basically the gain margin that is given to me, it is given for this k value. It is given for this k value. One thing I have solved. Similarly, when the gain margin is beta, the new gain, can you see it will be k marginally stable upon beta? मैंने जब गेन मार्जिन अल्फा है तब कितना गेन होगा वो भी निकाल लिया, जब गेन मार्जिन बीटा है तब कितना गेन होगा मैंने ये भी निकाल लिया. तो अब अगर वो आपसे पूछ रहा है कि k डैश कितना होना चाहिए, न्यू गेन, न्यू डीसी गेन कितना होना चाहिए, यानी k डैश, it will be k multiplied by k1. If I multiply k with some value k1, it will give me k dash and the gain margin will become beta. That's how you do the calculation. Or if you want to find k1, you can say it will be k dash by k. So here you are, either use this or use this, but try to understand the concept.
They can ask these kind of questions, especially in the GATE examination, because normally students know how to find the gain margin. But if I say that if I have a system, this is the system, and in this system alpha beta, sorry, I'm really sorry, अब confused हो गया, I'm really very sorry, मैंने अल्फा बीटा उसको ले लिया हुआ है ना, तो इसको ए और बी ले लेते हैं, ये सेम नहीं है, ठीक है, अलग है, सिस्टम है कोई बनाया हुआ मैंने। शुभम, इसका कोई भी लिंक है यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है, उस अभाव को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा अपने आप को लिंक करने की कोशिश करो, ठीक है। If people have any doubt, I have told you people, if it is something not related to what I am teaching, feel free to put it in the Telegram group. The question will be answered over there. If I'm not answering, there are a lot many students are there who have studied from me in great detail. They will answer all your queries. Okay? नितिन एग्जाम्पल करवा दूं, करवाने लगो बच्चा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये इसका एग्जाम्पल तो क्या करवाना है, ये प्रोसेस समझ लो बस, गेन मार्जिन फेज मार्जिन करवा रहा हूं, इसका प्रोसेस समझ लो, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि आपका गेन मार्जिन वो कह रहा है कि आपका गेन मार्जिन जो है वो अभी 12 है, न्यू गेन मार्जिन, इसी सिस्टम की बात हो रही है, और न्यू गेन मार्जिन 6 है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं कितने गेन से इसको मल्टीप्लाई करूं, मतलब मैं किस फैक्टर, फैक्टर क्या ले ले, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, गामा, मैं किस गामा से इसको मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं 12 से 6 पहुंच जाऊं। क्वेश्चन समझ में आया? We have a system whose transfer function is k upon s into s plus a into s plus b, where obviously a and b value will be given to you. Now, the gain margin in the present scenario of this system is 12. So, by what factor the k should be multiplied so that the gain margin of the system becomes 6? क्वेश्चन समझ में आया नितिन? नितिन, सवाल समझ में आया बच्चा? ओके, अब हम क्या करेंगे नितिन? सबसे पहले बच्चा, आप इसका राउट बनाएंगे, आप इसका राउट बनाएंगे, राउट बनाने के बाद आप के मार्जिनली स्टेबल निकालोगे, राउट बनाने के बाद आप के मार्जिनली स्टेबल निकालोगे, के मार्जिनली स्टेबल कुछ वैल्यू आई, कुछ भी आई के मार्जिनली स्टेबल वैल्यू, तब आप कहोगे कि के कितना है, के विल बी जो मार्जिनल स्टेबल वैल्यू आई अपॉन 12। अब के मार्जिनल स्टेबल कितना आया पता नहीं, भगवान जाने, ठीक है, कुछ के मार्जिनल स्टेबल आएगा यार, अपॉन 12 आपको के मिल गया। तो प्रेजेंट सिनेरियो में के इतना है, फिर आपने बोला कि के मार्जिनल स्टेबल अपॉन न्यू बीटा, तो के डैश इतना हो गया। तो के को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, के को गामा से मल्टीप्लाई किया होगा, तो के डैश मिला है, गामा निकल जाएगा। दिस इज अ प्रोसीजर, क्या है? जल्दी जल्दी समझते जाया करो, टाइम की कमी है, थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रखा करो आप लोग, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज, इफ वन इज गिवन हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट वन, प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये भी याद रख लो जल्दी से। इफ गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी is less than phase crossover frequency, please remember I'm talking all about the minimum phase system. ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी के बीच के रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे बच्चा, ठीक है। So if omega gc is less than omega pc, the gain margin will be positive, the phase margin will be positive, and the system will be stable. If omega gc is equal to omega pc, the gain margin is 0 in dB. This is, ये dB की बात चल रही है, ठीक है। This is 0 and the system will be marginally stable. If omega gc will be greater than omega pc, it will be negative, and system will be unstable. Will be unstable. तो ये रिलेशनशिप्स आपको ध्यान रखना है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के बीच में, विच विल डिसाइड अबाउट द स्टेबिलिटी। ओके,
एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो यार करवा ही देता हूँ। गेन मार्जिन फेज मार्जिन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जीएस इज इक्वल टू 1/s इंटू 1 + s+1 लिख लेते हैं, s+1 होल स्क्वायर, s+1 होल स्क्वायर एंड hs इज इक्वल टू 1. Find the gain margin. Find the gain margin. हमें इसका गेन मार्जिन निकालना है। तो हाउ वी विल डू इट? स्टेप्स तो पता है हमें। सबसे पहला, ऑलवेज if you are in the frequency domain, always bring the transfer function in the frequency domain first. How to bring the transfer function in the frequency domain? To bring the transfer function in the frequency domain, put s is equal to j omega. So g of j omega, h of j omega, because I need to find the open loop transfer function first. This will be 1/j omega 1 plus j omega whole square. So this is the transfer function I have. Now what to do? Represent it in terms of magnitude and angle, because you have seen that for gain margin and phase margin both, we need magnitude and angle separately. So find the magnitude and angle. Magnitude will be 1/omega under root of 1 plus omega square into under root of 1 plus omega square. That will be 1 plus omega square. Square root will get cancelled. Okay. Now moving forward, we are going to find the angle. Angle will be minus 90 degrees. Good, Shubham, shabash bacha. Good. Angle will be minus 90 degree minus 2 times tan inverse of omega. I hope आप लोगों को एंगल वगैरह निकालना आता है, इतना तो आता होगा यार, अब टाइम भी नहीं है सब सिखाने का। अब ठीक है, गेन मार्जिन निकालना है। सबसे पहला स्टेप, you have to find the gain margin at the phase crossover frequency. ये स्टेप्स लिखे थे मैंने आपके लिए। गेन मार्जिन, सबसे पहला स्टेप फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। लेट्स डू इट। So I'm going to equate the angle साइन हटा दे, to minus 180 degree. So this is minus 90 degree minus 2 times tan inverse of omega. If I'll equate it to minus 180 degree, then you know that this frequency will be the phase crossover frequency. Okay, now you can see 2 times tan inverse of omega pc will be equal to plus 90 minus minus cancel plus 90 degree, or you can see tan inverse of the phase crossover frequency is coming as 45 degree, and we know that tan of 45 is equal to 1. Therefore, first task over, omega pc is coming as 1 radian per second. Is it a valid phase crossover frequency? Absolutely valid phase crossover frequency, because it is positive value. Okay, now we have the phase crossover frequency. Then what is the second step? Second step is to find the magnitude of the transfer function at this particular frequency. At this frequency, find the magnitude. Magnitude will be 1/, instead of omega, put the value 1. 1 plus 1 square, that is 1/2. 1/2. Now, what is the gain margin? Gain margin is the inverse of the magnitude of the transfer function at the phase crossover frequency, and if you notice, this is coming as 1/1/2, that is 2, or approximately 6 decibels. Approximately 6 decibels. And this is the answer that we have. This is the answer that we have. I hope clear हो गया सबको, इसमें कोई डाउट आपत्ति परेशानी नहीं होनी चाहिए। Is this clear to everyone? ठीक है, और क्वेश्चन करने की जरूरत तो नहीं है? Is there any need to do more questions? तो जल्दी, अभी तो आगे बढ़ेंगे। करने और क्वेश्चन की बस, आगे चलो अगले कॉन्सेप्ट पे। ऐसे ही फेज मार्जिन भी निकाल लेंगे, ठीक है। फेज मार्जिन का प्रोसेस यही है, उससे मैग्नीट्यूड को 1 से इक्वेट करना, पहले इसको 1 से इक्वेट करना, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आएगी। आफ्टर कैलकुलेटिंग द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी,
पुट इट इन दिस, गेट द एंगल एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, आई होप वो सब क्लियर है। नितिन एक और करना है? ठीक है बच्चा। कौन सा करें फिर? क्वेश्चन याद भी आने चाहिए ना। चलो ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला करते हैं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है ना नितिन बच्चा, प्रॉब्लम पता है क्या, सिर्फ टाइम की है। करवाने को तो क्लास में मैंने इतने क्वेश्चन करवाए थे कि करते करते थक जाए हम लोग, लेकिन क्रैश कोर्स है ना बच्चा, प्रैक्टिस नहीं करवा सकता बिल्कुल प्रॉपरली। पर चलो आपने कह दिया है तो मैं कर देता हूँ। फेज मार्जिन इज 50 डिग्री एट ओमेगा जी सी इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड अल्फा। करो, कॉन्फिडेंस चाहिए तो खुद करना है। दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, डू इट। 2 मिनट लो, करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन है इसका। And see, if you are enjoying the class and you are learning something, so a thumbs up does not hurt you people. It's just a thumbs up. So like the video or drop a comment. It always motivates me a little that you are liking the content that I'm providing you on the YouTube. Okay, let's solve it. I hope you have tried this question. Now, my turn to solve. The first thing first, that if we want to find the alpha, and the information about phase margin and gain crossover frequency is given, the first thing that comes to my mind is that I need the open loop transfer function, that too in the frequency domain, and from that I need the magnitude and angle. This is without even mentioning it, this is what I have to do. ठीक है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो GSHS क्या है हमारे पास, K इंटू 2 + α s अपॉन S इंटू S+1। ये आ गया हमारे पास GSHS। नाउ put S is equal to j omega because I want to bring it in the to the frequency domain. So G of j omega h of j omega, this will be K into 2 + j omega alpha upon j omega 1 plus j omega. Okay, good Varun, शाबाश, good. तो नितिन बच्चा अंडर रूट ऑफ 5/2 उसमें देखो कितना है पॉइंट्स में। तो ये आ गया हमारे पास बच्चा g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा। आई नीड द एंगल ऑफ दिस, क्यों, फेज मार्जिन दिया हुआ है, ओमेगा जीसी निकालना ही नहीं है, दिया हुआ है। ठीक है, सो एंगल g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा is -90 डिग्री बिकॉज ऑफ j, दिस इज -90 डिग्री। ऐसे लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, पहले मैं न्यूमरेटर ही लिख देता हूँ, अदरवाइज लिख सकते हैं। तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अल्फा बाई 2 , -90 डिग्री,
माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। ये मेरे पास एंगल आ गया। अब चलो बातचीत करते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। वो बोल रहा है, यहां पे कर रहा हूं बच्चा, जगह कम है, ठीक है। फेज मार्जिन, वी नो दैट दिस इज 180 डिग्री plus phase angle of the system at the gain crossover frequency. I have all the information. Let's put it over here. So, how much is the phase margin? 50 degrees. Fine. Is equal to 180 degrees plus the phase angle of the system. That is, this is the phase angle at the gain crossover frequency, that is 2. So, I can write it as tan inverse of 2 cut gaya. So, tan inverse of alpha minus 90 degrees minus tan inverse of 2. हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर tan inverse of alpha is coming as, I'll have to do the calculation. So we are left with 23.43 degrees. And therefore alpha will be tan of this value. .433 is the answer. This is the answer. ठीक है, अब तो कर लोगे, और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अब कर लोगे मुझे लग रहा है अब। ठीक है, टेकिंग द टाइम इनटू कंसीडरेशन, प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑन योर ओन। या फिर मैंने आपको बताया गेट के पीवाईक्यू सारे करवा दिए गए हैं, एक बार वहां जाके उन पीवाईक्यूज को करना है। एंड आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ओवर देयर, तो आप लोग कर लेंगे वहां पे प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वरुण अगला टॉपिक कहाँ, अभी फेज मार्जिन गेन मार्जिन खत्म करेंगे और बस उतने में ही क्लास खत्म हो जाएगी आज। ठीक है, अगला टॉपिक तो नाइक्विस्ट है, और नाइक्विस्ट मैंने आपको बोल दिया है कि मैं स्पेशल क्लास में अब करवाऊंगा आपका, स्पेशल और यूट्यूब मिक्स करके खत्म करवा दूंगा क्रैश कोर्स। टाइम नहीं है, अब आपका एग्जाम आ गया हुआ है। तो मॉर्निंग में संडे को, कल सैटरडे संडे, संडे को आपकी स्पेशल क्लास होगी। प्रोफाइल फॉलो करते रहना, टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहना, क्लास डलेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्लास में पहुंच जाना। ठीक है वरुण। So what I'm going to do now is going to talk about the transportation delay. Transportation delay. Okay. तो ट्रांसपोर्टेशन डिले की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें भी। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग दैट इफ वी हैव मींस, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं यार, अब मैं ना इसमें टाइम वेस्ट इसमें भी नहीं करना चाहता। दैट इफ यू हैव h of t, you are giving x of t as the input. So what happens when you are getting the output? The output gets delayed by some time. Transportation delay means there is no change in the input. There is no processing that is happening on the input, but it is getting delayed. मतलब टाइम लेट होकर आया है थोड़ा सा बस। ठीक है, तो इफ यू गो फॉर द ट्रांसफर फंक्शन h of s, output upon input transfer function x of s e to the power minus st upon x of s, you can see h of s is coming as e to the power minus s. ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन डिले निकल के आया है। I hope you do remember I told you when we were studying the time domain that whenever you have e power minus st, replace it approximately by 1 minus st to solve the questions. याद आ रहा है? But in frequency domain, it's not a problem like this. In frequency domain, we are cool with this thing. Why? Because it's not troubling us. If you put, because what we need is the magnitude and angle. That's what we need actually in frequency domain. So h of j omega will be e to the power minus j omega t.
व्हाट इज मैग्नीट्यूड 1, व्हाट इज एंगल माइनस ओमेगा टी। बस एक चीज का ध्यान रखना, दिस एंगल दैट वी हैव रिटन इट इज इन, ठीक है सर मैं डिग्री में करना चाहता हूं, सो आई होप यू नो दैट हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री, अदरवाइज इफ यू वांट मी टू डायरेक्टली राइट इट, इट इज -57.3 omega t if you want to write it in degrees. Otherwise, 1 minus omega t that you write, it is in radians. Then how it affects a gain margin and phase margin, we are not going into that. We are straightforward picking up one question from the practice, for the practice sake. Okay, सीधा क्वेश्चन उठाते हैं प्रैक्टिस के लिए। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ, इफ ज्यादा तेज तो नहीं हूँ मैं, धीरे धीरे पढ़ा हूँ। एक्चुअली क्या है, तब आसान सान है, इसलिए थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ाई है आज। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड कम कर लेंगे। If you're finding that I'm teaching too fast, we can decrease the speed a little if you want to. So please tell me, speed is okay or should I increase? No, sir, it's fine. Okay, good. Great. So let's solve a question. Do it. करो। Gain margin और phase margin निकालो, शाबाश जल्दी से। Quickly find the gain margin and phase margin for this. ट्राई करो, निकले ना निकले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करना है बस, फिर मैं कर देता हूँ। Just 2 minutes, that's it. After that, I'm gonna solve this question. Na KJ, not many teachers left. It's not like that. It's not like that. गुड गुड शुभम, गुड शाबाश। फेज मार्जिन में निकाल दो बच्चे जल्दी से। ये जी most of the good teachers are still on an academy. Most of the good teachers are still on an academy. It's not like that. You find most of the toppers are still there on the academy. Very few teachers have left. Maybe they have left or removed by the management. I have no idea about that, so I can't comment about that thing. But very few changes means I hardly noticed, except one or two people, hardly noticed anybody left. ग्रुप्स में र्यूमर करने दो यार, र्यूमर तो र्यूमर है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज र्यूमर। व्हाई डू यू पे अटेंशन टू र्यूमर्स? र्यूमर को र्यूमर ही रहने दो, उसको अटेंशन देगो तो फिर वो र्यूमर जो है वो खराब होती है। र्यूमर र्यूमर ही रहनी चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। व्हाट आई एम गोना डू, द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज टू ब्रिंग इट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सबसे पहले इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर आएंगे। इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन pi e to the power minus j 0.25 omega upon j omega. Then what is the next thing? We are going to find the magnitude and angle. आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 मैंने भी लिख के भी दिया था आपको। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, क्या बचा? पाई, नीचे
खाली ओमेगा. Angle minus 90 degree, I'm writing it as pi by 2 so that all the angles are in radians. You want to write 90 degree, it's okay. So minus 90 degree and its angle will be minus 0.25 omega. जो होता है बस वही angle होता है इसका. So minus 0.25 omega. I have the angle, I have the magnitude. Now let's start solving the gain margin and the phase margin. First, I'm going for the gain margin. You know that the gain margin is calculated at the phase crossover frequency. At the phase crossover frequency is that frequency at which the phase angle of the system is minus 180 degrees. Okay, let's put the values. So, what is the phase angle? Minus pi by 2 minus 0.25 omega pc. Why omega pc? Because at this frequency it is going to be minus 180 degree, that is minus pi. Hence we can write it as minus omega pc divided by 4 प्लस लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं, minus pi by 2 2 2 2 minus cancel 2 pi. Omega pc is coming as 2 pi. So we have got the phase crossover frequency as 2 pi radians per second. 2 pi radians per second. First task over. Now the next thing we have to find the gain margin. What is gain margin? Gain margin is the magnitude of the transfer function at the phase crossover frequency. What is the magnitude? Pi by omega. So pi by omega, instead of omega, I'm going to put omega pc because at omega pc I'm doing the calculation. Put the values 2 pi divided by pi. Hence you can see gain margin is coming as 2. Gain margin is coming as 2, or you can write it as 6.02 dB if you want to write it down in the decibels. पहला टास्क खत्म हो गया. पहला टास्क खत्म हो गया. Now moving to the second task, that is phase margin. You know that phase margin is calculated at the gain crossover frequency. Gain crossover frequency क्या होती है? Gain crossover frequency वो frequency होती है जिसपे system का magnitude, open loop transfer function का magnitude 1 होता है. By the way, what is the magnitude? Pi by omega. So if omega equal to omega gc, this magnitude will be 1. Hence the gain crossover frequency that we are looking at is coming as pi radian per second. Hence the gain crossover frequency is coming as pi radian per second. Now, we're done with this. The next thing that we want is phase margin. What is phase margin? Phase margin is 180 degrees plus the phase angle of the system at the gain crossover frequency. Great. 180 degree, I'm writing it as pi because you know that here you have taken the angle into radians. So convert it into radians, pi. Then what is angle? Minus pi by 2 minus 0.25 omega gc. Substitute the value. Pi minus pi by 2 is pi by 2 minus omega gc is pi, so minus pi by 4. Pi by 2 minus pi by 4, 2 pi, pi by 4 or 45 degrees. This is my phase margin. This is my phase margin. I hope सबको clear हो गया होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी. Basically that's how we deal with this kind of things and that's how we do the calculation. That's how we do the calculation. Now coming back, ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलो. किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? I hope this is clear. Very easy. Can I move forward? Can I move forward? Yes. Thank you. Now I'm giving you a shortcut. Only one question I'm going to do. If you understood it, great. If you haven't, then use the method that we have learned. अगर आपको gain margin निकालना हुआ, if you want to find the gain margin, there is no need to do all these things. There is a shortcut to find the gain margin. So what is the shortcut? See,
मैं लिख रहा हूं, थोड़ा लंबा लगेगा आपको, लेकिन जल्दी हो जाता है एग्जाम में. इंस्टेड ऑफ राइटिंग GSHS as 1 upon S into S plus 1 whole square, write it as K upon S into S plus 1 whole square. Can you do that for me? Can you do that for me? Yes. Then find the characteristic equation that will be S cube, S square आएगा ना, S square plus 2S plus 1. ये आपके पास characteristic equation आ गई. From here, find K marginally stable for this system. This system will be marginally stable, inner product equal to outer product, शॉर्टकट सिखाया हुआ है 2. तो गेन मार्जिन क्या होगा? K marginally stable अपॉन K डिजाइन और K डिजायर्ड. कितना आया मार्जिनली स्टेबल इस सिस्टम का? 2. कितने के लिए सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हो? 1 के लिए. गेन मार्जिन इज 2. Done with this. Done with this. This is a shortcut actually normally I use, even if you see the PYQ series that we did, and in that this was the shortcut I was straightforward using to solve the question. This was the shortcut my students were using actually to get the answer. When I do remember someone who's non-subscriber, not studied from me, he said that, sir, how someone can solve the gain margin question so quickly? This is what they were doing actually. The shortcuts that I have taught them in the class, they were utilizing those shortcuts to get the answer. But there are more things to this shortcut also. What if we are unable to find the marginal stable system? What if the last row becomes equal to 0 for some value of gain k? That is a different story. I'm not going into that much of depth. For that, you will have to study the whole subject because it's a crash course. So I've given you a little bit of idea about the shortcut, how to use the shortcut. Desired ये रहा बच्चा, ये रहा desired, ये है desired. ठीक है? This is a desired actually. ये रहा जिसके लिए हमने कहा जनरलाइज सिस्टम ये था. आप कह रहे हो कि अगर ये गेन के 1 है तो बताओ इसका गेन मार्जिन कितना होगा. आपने यही बोला ना, अगर ये के 1 है तो बताओ गेन मार्जिन कितना होगा. तो इसके लिए डिजाइन करना चाह रहे हो ना आप, लेकिन मार्जिनल स्टेबल ये है तो यहां से आएगा. लग गया नितिन पता? डिजाइन कैसे पता चला? नितिन क्लियर? ओके. शुभम बस यार इतना नॉलेज अच्छा नहीं है. जितना बता दिया बहुत है. So this was all about gain margin and phase margin, although there are a lot of things, but I tried my level best to cover as much as possible. Now please go to the PYQ class. In that I have done a lot of questions, means all the questions from past approximately 30 years that have been asked in electrical, all electronics or instrumentation gate examination. I have done all the questions. Go to those questions. Find those questions and you will notice you are in a position to solve each and every question of the gain margin and phase margin. I've taught you everything. I've taught you everything. So you should be able to do that. You should be able to do that. So if you have any doubt, please feel free to ask me. Otherwise, I'll wrap up the class for today. Tomorrow there is no class. Day after tomorrow, that is on Sunday, there is a 99.999% probability that around 11 a.m. or 12 p.m. in the morning or in the noon, I'll be taking your special class in which we are going to start the Nyquist plot in the special class. So I'll put the class maybe on Saturday. You will get the notification in the Telegram group or follow my profile. That's the best way to do it. Follow my profile on the Unacademy. You will get the notification of the class. वरुण बच्चा नाइक्विस्ट और स्टेट स्पेस ही रहा है. अगर टाइम बचा तो कंट्रोलर और कंपनसेटर भी टच करवा दूंगा, लेकिन मेन स्टेट वही बचा नाइक्विस्ट और स्टेट स्पेस, क्योंकि उसमें कंट्रोलर में चलो फिर भी समझने वाला है. कंट्रोलर में तो सबने सेम ही पढ़ाया होता है कि एक कंट्रोलर लिया, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ लगा दिया, फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, अब देखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या चेंजेस आए हैं, तो क्या इफेक्ट लाया उसने. स्पेशल 2 घंटे की होगी वरुण, 2 घंटे ही क्लास लूंगा, चिंता मत करो. संडे को भी 2 आवर्स क्लास लूंगा मॉर्निंग में, मंडे को भी 2 आवर्स क्लास लूंगा. स्पेशल विल बी फॉर 2 आवर्स ओनली. तो स्पेशल में क्या करूंगा ना बच्चा वरुण, जैसे मैं नॉर्मल प्लस क्लास में करता हूँ, 1 घंटे की क्लास, 15 मिनट का या आधे घंटे का या 20 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे की क्लास, ऐसे करके 2 डाल दूंगा आप लोगों की.
कौन से वाले फॉर्मूले से वरुण बच्चा, किस फॉर्मूले से पूछ रहे हो? वेलकम नितिन बच्चा, वेलकम। टेक केयर। दोज़ जिनको डाउट नहीं है बच्चा, यू कैन लीव द क्लास। हाँ, सेम वैसे प्लस वाली। जिनको डाउट नहीं है बच्चा, यू कैन लीव द क्लास, ओके? दोज़ हू आर नॉट हैविंग एनी डाउट, यू कैन लीव द क्लास। आई थिंक अब कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, सब कुछ तो पढ़ लिया डिटेल में, ठीक है? सो आई विल रैप अप द क्लास। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है? चलो। चलो बच्चा फिर मिलते हैं संडे को, ओके? एंड प्लीज़ बी एक्टिव इन द टेलीग्राम ग्रुप एटलीस्ट सैटरडे रात को नहीं तो संडे मॉर्निंग में देख लेना, कि टेलीग्राम ग्रुप में क्या डाला हुआ है, क्लास है कि नहीं है, दूसरा स्पेशल क्लास की नोटिफ़िकेशन तो आ ही जाएगी आपको, ठीक है? सो वी विल बी डूइंग दैट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि लेनी मैंने 100% है, बट तबीयत खराब हो गई है, गला थोड़ा ज़्यादा खराब हो गया, एक दिन की रेस्ट ना ले लूँ इसलिए बोल रहा हूँ बस। चलो यार, गुड नाइट, टेक केयर बच्चा। गुड नाइट एवरीवन, सी यू, बाय बाय।